We have clash of culture, then we have individual versus societal change, silence and power, and the symbolic significance of the funeral. Clash of culture में यही है कि it highlights the cultural how the culture is divided between the white and the black communities, और किस तरह क्लारा जो है black funerals के पास जाती है, attend करती है, कि वो अंडरस्टैंड करना चाहती है एंड शी वांट्स टू ऑब्जर्व द अदर वन एज वेल, लाइक ये तो खुद वाइट कम्युनिटी से बिलोंग करती है बट शी वांट्स टू ऑब्जर्व द ब्लैक कम्युनिटी एज वेल, क्योंकि इनकी फ्यूनरल में सेग्रीगेशन होती है. एंड शी लेटर ऑन इवन अटेम्प्ट्स टू कनेक्ट विद मीरियम, जिसका भाई भी मरा होता है या फ्यूनरल उसका अटेंड करती है. And then we have individual versus societal change. So Clara's personal growth is juxtaposed against the larger issue of systematic racism, while she challenges her own prejudices, and the story subtly suggests the limitations of individuals' effort without broader societal change. तो juxtaposed का मतलब है to keep things side by side. तो इसका जो personal growth है वो it was aligned with the larger issue of systematic racism when she was growing. तो इसका सोसाइटी में इशू था अपार्थाइड का, रेसिज्म का, रेशियल सेग्रीगेशन का या रेशियल डिवीजन का. तो ये वर्सेस हो जाता है while she challenges her own prejudices. prejudice मतलब things she is biased upon. सो द स्टोरी सटली सजेस्ट द लिमिटेशंस. तो ये स्टोरी लाइटली सजेस्ट करता है लिमिटेशंस की, किस तरह एक इंडिविजुअल को अगर हम पढ़ें तो हाउ डिफरेंट देयर लाइफ वुड बी. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल थिंग, सो दोज वर द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अपार्थाइड मूवमेंट. देन वी हैव साइलेंस एंड पावर. सो साइलेंस जो है हमेशा हर एक की लाइफ में और इवन इस शॉर्ट स्टोरी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह अगर लोग कहते हैं कि ओके somebody is talking to you and you are not liking his or her tone, so just be silent and ignore कर लो, ये कर लो, वो कर लो. तो साइलेंस हमेशा एक you even people say that silence is itself an answer. तो साइलेंस जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. देन वी हैव symbolic significance of the funeral. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एंड अगेन इट इज रिपीटेड. सो इधर है the funeral acts as a microcosm of the larger struggle of freedom and dignity under apartheid. It becomes a space for collective expression, grief and resistance against oppression. तो सिग्निफिकेंस जो है फ्यूनरल का वो ये है कि हमारा जो कलेक्टिव ग्रीफ होता है और जो एक्सप्रेशंस होते हैं उस टाइम पे, तो इट इज़ अगेंस्ट ऑपरेशन. कभी हम खफा होते हैं, कभी हम एंग्री होते हैं या एंगर में होते हैं. उस टाइम पे हम लोग हमेशा पेरेंट्स की बात नहीं मानते या वी आर अगेंस्ट ऑपरेशन और हम हार्शली बात करते हैं, हार्श साउंड करते हैं. सो दीज थिंग्स आर अगेंस्ट ऑपरेशन. एंड a funeral is basically highlights the importance और struggle for freedom, कि इंसान struggle करते करते मर गया under this apartheid movement. Uncovering the important quotations with explanations. So we have 7 quotations and let's begin. The first one is, she stood at a distance, an alien in a shifting crowd of black. Now this is the opening line which says Clara's outsider status and highlights the racial divide. अभी इसका मतलब ये है कि किस तरह क्लारा की दो काइंड ऑफ स्टेटस थे. एक ये कनेक्ट करती थी ब्लैक कम्युनिटी के साथ और शी यूज टू बिलोंग टू वाइट कम्युनिटी. एंड हेयर द यूज़ ऑफ एलियन एम्फसाइजेस द कल्चरल एंड सोशल डिस्टेंस बिटवीन हर एंड द मोर्नर्स. जो कि वो ब्लैक कम्युनिटी मातम मना रही थी किस तरह अपार्थाइड का या अपार्थाइड में इन्वॉल्वमेंट का वो चाहते थे कि ओके दिस शुड प्रीवेल एंड जस्टिस शुड प्रीवेल. लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियन एम्फसाइजेस कि किस तरह कल्चरल और सोशल डिस्टेंसेस हैं वाइट कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी में. द सेकेंड कोटेशन इज दैट फॉर अ मोमेंट अंडर द रॉ सन द वाइट चाइल्ड एंड द ब्लैक वुमन looked at each other, the space between them bridged by something that had no name.
Now, this is the moment of connection that transcends racial barriers and suggests a shared humanity. इस टाइम पे जब मदर और चाइल्ड की बात है, so there's the concept of motherhood, and here it's written something that had no name. Now it emphasizes the complexity and unspoken nature of the interaction. किस तरह ये humans interact करते हैं and they create that bond between each other. Third quote is about death. So these deaths were different. They were deaths that were lived with, that were a continuation of life. So now this quote reflects Clara's initial perception of black funeral as exotic and different from her own experiences, and I have already told you funeral में division था या segregation था, so it hints at her lack of understanding about the realities of life and death in the black community under apartheid. जो apartheid movement को follow करता था, support करता था, उसको one by one either इतने harsh struggles करने पड़ रहे थे लाइफ में, या तो वो उनको मार दिया जाता था because violence बहुत था. The fourth one is the white cars with their white occupants steamed past, oblivious to the black tide of humanity flowing towards the cemetery. ये कोड रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट कम्युनिटी को, कि वाइट कार वाले लोग हैं वो वाइट पीपल हैं विद देयर वाइट ऑक्यूपेंट्स, जो वाइट कॉलर होते हैं ना, एलीट क्लास, स्ट्रीम्ड पाथ past, oblivious to the dark tide of humanity flowing towards the cemetery. Oblivious का मतलब है कि when you are ignorant towards something, या आप past को remember नहीं कर सकते, and cemetery is the burial. ठीक है. So this image symbolizes the indifference and ignorance of the white community towards the struggles and experiences of black South Africans. ये जो वाइट साउथ अफ्रीकन्स हैं, ये अपने ही मज़ों में है, इलीट क्लास है, वाइट कार्स चलाते हैं, वाइट ऑक्यूपेशंस हैं, वाइट कॉलर जॉब्स हैं इनके पास, एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द ब्लैक कम्युनिटी ऑफ साउथ अफ्रीका. सो द contrasting color emphasizes the racial divide and lack of connection. The fifth quote says, "They were singing now a slow that rose and fell like a beating of the crowd." अब ये जो लिखा हुआ है डिफरेंट लैंग्वेज में, ये असल में चाइनीज़ में लिखा है और इसका मतलब है सैड मेलोडी. सो लोग जैसे क्रिश्चियंस हैं और ये सारे, ये लोग फ्यूनरल्स में सॉफ्ट सा म्यूज़िक लगाते हैं, सॉफ्ट या सैड इस तरह का. So this description brings the funeral scene to life and evokes a sense of shared grief and resilience. The music becomes a unified force and transcending individual experience and creating a collective expression. तो जब भी funerals में ये लोग एक sad melody सी लगाते हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि everybody is quiet and they are thinking about the good memories of that person, कि उनके साथ इस बंदे की कैसी memories गुजरी है. The sixth one says, "It was the silence that frightened her, the dead silence of the white car in the midst of the singing." So now this moment highlights Clara's fear and awareness of the dangers of transgressing racial boundaries. The silence becomes a symbol of the potential consequences of her action and the ever-present threat of violence. तो ये जो साइलेंस है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन वन ऑफ द थीम और सिंबल्स, कि ये itself it is an answer, and even if you do not speak anything, silence speaks everything for you. तो इधर क्लारा की जो है बहुत ज़्यादा शी वॉज अफ्रेड ऑफ दिस थिंग, दैट वाई देर इज सेग्रीगेशन इन एवरीथिंग and why people do judge on the basis of color. She had looked into the well of their common humanity and had found fear. Now this is the concluding quote, and this concluding line encapsulates the story's central theme, the difficulty of overcoming ingrained prejudice and the limitations of individuals' action in the face of systemic oppression. It leaves the reader pondering the complexities of racial dynamics and the possibility of true understanding and connection.
तो इसमें सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया है कि किस तरह और लोग क्यों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और हमारी लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं एंड इट इज़ हैविंग द लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्शन क्योंकि सिस्टम जो है वो प्रेस्ड होता है तो इंडिविजुअल्स मूव अहेड in the counter action and how individuals face difficulty in overcoming the actions of the systemic oppression system का जो ऑपरेशन है वो किस तरह ओवरकम करते हैं individuals. The conclusion of this long lecture and I'm sorry for it but it is the very first video on YouTube and therefore I made it long so that you people can understand it in great depth. A Watcher of the Dead is a powerful exploration of racial dynamics मतलब किस तरह एक रेस पे या कलर पे या कास्ट या क्रीड पे लोग कितना सेग्रीगेशन करते हैं इंडिविजुअल ग्रोथ कैसी हो रही थी दी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कन्फ्रंटिंग सोसाइटल नॉर्म्स so now it challenges readers to examine their own biases and question the injustices around them. While set in a specific era, the theme remains relevant, encouraging empathy and understanding across social divides. जो मेरे लिसनर्स हैं मैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ कि वेन एवर यू आर हैविंग एनी लिटरेरी पीस पोम है शॉर्ट स्टोरी है नॉवल है ड्रामा है कुछ भी है यू कैन ऑलवेज इंटरप्रेट दैट लिटरेरी पीस इन योर ओन वे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस होती हैं ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी इंटरप्रेट कर दिया है अपनी तरफ से तो यू कैन गो यू हैव टू गो विद इट नो यू कैन गो विद इट बट इवन यू कैन ऐड योर ओन इंटरप्रिटेशन तो ये शॉर्ट स्टोरी इसी तरह इंटरप्रेट हो रही थी और अगर आप लोग अ वॉचर ऑफ द डेड ये टाइटल भी देखें तो वॉचर जो है ये लड़की हो गई क्लारा और ये लोगों को मरते हुए देखती थी या फ्यूनरल्स को देखती थी उसको अटेंड करती थी so that she can have the insight or the learnings of life and death of two different communities, white community and black community. This was all about my video. Thank you so much for watching till the very end. अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर कुछ भी समझ आया है इस वीडियो में तो hit the like button, share it as much as you can. Take care of yourself. Allah Hafiz. Will meet you guys in the next video.